କରୁଛୁ जोटा होची ईमेल माध्यम रे हमरो संभव होई पारछि द टेक्नोलॉजी हैज डेवलप्ड अ लॉट टुडे and it doesn't take too much of time to send a message for an urgent work or if there is an emergency we can send a message very quickly through mail बुझिला mail होची ଆଜ୍ଞା it ସାର୍ is used for official purpose बुझिला suppose ଆଜ୍ଞା ସାର୍ I may send a message on WhatsApp. Suppose I would like to send a message to my principal that I would like to take a leave for a day. ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ମନେକର ଛୁଟି ନେବି and it is very urgent. I am at home and I am not able to reach my college or I am not able to reach my office, so I can send a message through email that is known as mail. Mail बोलिकर जोटा कहूँ आमे mail बुझिला इलेक्ट्रॉनिक ହଁ मेल बा इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम रे आमे केमती हमरो मेसेजटा बहुत क्विकली पठे पारछु दैट इज ईमेल बुझिला एंड इट इज ଆଜ୍ଞା यूज्ड फॉर ऑफिस पर्पज आल्सो बुझिला ऑफिस पर्पज रे आमे ये होची गोटे ऑथेंटिकेट माध्यम बुझिला ये होची गोटे ऑथेंटिकेट माध्यम जोटा कि गोटे प्रकृत माध्यम बोलिकर आमे कहूछु बुझिला so ଆଜ୍ଞା nowadays the use of computers has become very common and it is very easy to send message through electronic mail which is known as electronic mail. Email, the full form of email is electronic mail. Though mail this method, the message sent quickly and it is not expensive and it is not that much expensive. Only you must have internet balance, that much will be sufficient to send a message. बुझिला but it ଆଜ୍ଞା was ସାର୍ not there in the past and as we know that we were using what or we used to what telegram for an emergency or for an urgent work if you want to send a message you ମିଲିଗ୍ରାମ you are going to be paid for that or you are going to be paid each per letter बुझिला प्रत्येक अक्षर को नहीं ହଁ करे जी हम चार्जेस दिया जाउतला बुझिला ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡିଥିଲା but it was developed later and it was known as or it is known as email by electronic mail बुझिला which doesn't take too much of time to send a message if there is an internet जदि internet रहिला बुझिला then we can ହଁ send a ସାର୍ message and it is an authenticate medium to send a message to authority or whomever जहाँ को भी हम पठे परिबा बुझिला and ଆଜ୍ଞା ସାର୍ especially it is used for office purpose wherever it is urgent or if there is an emergency बुझिला ଆଜ୍ଞା ସାର୍ the format of email is quite simple just like the telegram form you can see the telegram form बुझिला telegram form जेम भली भाव रही थाए similarly there is another format which is given below you can see देखो देखाई छी to drpatnaik@gmail.com बुझिला and what ହଁ is ସାର୍ that cc what does it mean जानिचो the meaning of cc what that means ଜାଣିନି ସାର୍ to whom माने टू मोर पर्सन्स वी कैन सेंड आउ क्या तुम कॉपी पठेबा पई चाहूचो बुझिला द सेम थिंग इफ यू वांट टू सेंड अदर पर्सन्स you will have to mention their addresses over here like drpatnaik@gmail.com तांकर जेमती पठा जाईची तांकर लिखा जाईची सेमती to whom you want to send message आउ अधिका लोक काकू पठेबा को चाहूचो कॉपी बुझिला ହଁ ସାର୍ एठी सेमानकर ना सेमानकर जीमेल एड्रेस रहिबो बा ईमेल एड्रेस रहिबो बुझिला and from rrpatnaik@yahoomail.com बुझिला एटी देछि yahoomail.com एठु आमे मनकर मेसेज भी पठै पारिबा सपोज तमरो एड्रेस रहिला amoko@gmail.com it will automatically come if it is signed in हला जदी साइन हे जायछि ऑलरेडी हमर ईमेल रहिबो सेटा बुझिला सेटा ऑलरेडी आसी जीवो फ्रॉम रे बुझिला देयर इज नो नीड टू मेंशन बुझिला एंड डेट इज नॉट देयर डेट केबे आसीबो नै ईमेल फॉर्मेट तमे आज देखि दबो आउ थरे एंड एठी सब्जेक्ट रहिला हमरो री जोटा रहिछि सेटा होछि सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर मनी सपोज द सब्जेक्ट इज समथिंग लाइक दिस बुझिला एमती तापर Okay. वी कैन एक्सप्लेन देयर विल बी ए बॉक्स बुझिला जोठी के हमको एलाबोरेट करिवार थिवो जहा किछि लिखिवार थिवो हम किछि हमर भाषा रे हमर लैंग्वेज रे जहा किछि लिखिवार थिवो जहा हमें मेसेज लिखि परिबा एंड इट कैन बी written in detail it हम डिटेल लिखि परिबा बिकॉज़ वी आर नॉट गोइंग टू बी चार्ज्ड फॉर लेटर और फॉर वर्ड हमें एठी टंका देबा को पडू नाही बुझिला इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट ओनली थिंग इट शुड बी देयर इन द मोबाइल दैट इज you must have internet balance and it should be activated बुझिला active net balance रोइले हमरो मेल टी जाई परिबो बुझिला everything it is mentioned in detail बुझिला this is the complete format so what more things we have to remember देखो it is expressed briefly or it is explained briefly here you cannot write names of those places
कौन जगार ना लिखिपर ना नंबर 1 रे जोटा अच्छी जोटा आईडी ईमेल आईडी रे आमे कौन लोकर ना लिखिपर ना ओनली ईमेल आईडी एड्रेस पे लिखा एड्रेस इज इंपोर्टेंट एड्रेस विल बी मेंशनड ओनली हला तापर कह जाय सीसी द मीनिंग ऑफ सीसी इज कॉटेसी कॉपीज बुझेला सौजन्य कॉपीज आ काको पठेबा को चाहूछु दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीसी if you want another person to know the contents of your email then write his her email id after cc जोटा मु मेंशन करली बुझेला जे काको अधिका लोक काको पठेबा को चाहूछ द सेम कंटेंट दे आल्सो वुड लाइक टू रिसीव बुझेला then write the subject of your message against re जो अछि that is known as regarding संपर्क करे salutation is not necessary but you can use it in order to create a better impression and if you देखो मु कौन कहली इट इज यूज्ड फॉर ऑफिस पर्पज बुझेला जेमति कि आई टोल्ड यू दैट आई वुड लाइक टू टेक अ लीव फॉर 2 days or 3 days and it is too difficult as to go to the office and I am not able to reach to the office and I am not able to connect to the principal बुझेला कनेक्ट मु हेई पारो नै जेहेतु if I have an email id if I have an activated internet balance बुझेला मो पाखरे इंटरनेट एक्टिवेटेड बैलेंस अछि एंड इफ आई हैव एन एंड्रॉइड फोन इट इज आल्सो टू मच इंपोर्टेंट और एल्स लैपटॉप जदि मो पाखरे लैपटॉप अछि कि जहा कि कंप्यूटर कि नहीं yes हां सर I can send a message and it is the authenticated way if I send the same message on WhatsApp it will not be authenticated बुझेला एटा प्रकृत माध्यम हेबो नै WhatsApp रे if I use WhatsApp or other materials to send a message to my higher authority will not be counted बुझेला एटा जे कोनसी प्रॉब्लम हेले मोर कथा को बुझा जीवो नाही मोर समस्या कोठी बुझा जीवो ओनली एन ऑथेंटिकेटेड वे एंड व्हिच इज नोन एज एन ऑथेंटिकेटेड वे दैट इज email okay so whatever message I want to send to my authorities or to others or if I am if I like to use it in a authenticated way I should take the help of that email बुझेला एटा सेथि पय कहै राइट द सब्जेक्ट ऑफ योर मैसेज अगेंस्ट रिगार्डिंग सल्यूटेशन इज नॉट नेसेसरी बट सल्यूटेशन बोल कहले संबोधन बुझेला इट इज नॉट नेसेसरी बट इफ वी यूज जदि आमे यूज करूछु ताले इट विल क्रिएट इंप्रेशन एंड इट वुड नेवर बी रॉन्ग हला भूल हेबो नाही जदि आमे संबोधन करूछु डियर सर बुझेला और डियर मिस्टर पटनायक और डियर मिसेस स्वाई जहा किछ आमे लिखि परिबा that is salutation and last को आउ गोटे संबोधन रहउची कोन हमर एंडिंग रे yours sincerely or yours faithfully or yours obediently those kind of words we can mention as salutation in the email बुझेला हां सर हां देखो एटी खाली पापा लिखाइ छी देखि पाउछो हां हां डियर पापा लिखाइ जाय परबो और लिखियो चाहछो टू द प्रिंसिपल मनकर बालीमेला कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट आल्सो कैन बी मेंशनड हियर बुझेला so those are known as salutation बुझेला so be very precise while composing your message and email जेमती मु कहले टेलीग्राम इट इज क्वाइट मॉडर्नाइज्ड टुडे आज टिके मॉडर्नाइज होईची से टेलीग्राम जिनसो ही हमें ईमेल माध्यम रे लिखुछु टेलीग्राम रे आई मु कोन कहथि तुमको आई टोल्ड यू दैट इट शुड बी वेरी ब्रीफ एंड द ईमेल व्हेन वी आर गोइंग टू कंपोज ए मैसेज बुझेला वी शुड लुक आफ्टर द वर्ड्स बुझेला वी कैन or we will have to write it precisely as per the demand of the situation how briefly we can end or how briefly we can write that is essential हमें बहुत briefly लिखिबा everything will be there and it should be precisely mentioned बुझियला precisely अति अल्प वाक्य हमें लिखि सरेबार अछि बुझियला तापर नंबर 6 अछि कोन देखो block your paragraphs at the left use single line space within the paragraph and double space between paragraphs बुझियला से कथा कहै छी माने पैराग्राफ केमति मेंशन इट इज नॉट दैट मच नेसेसरी जस्ट दोज आर द रूल्स इट इज मेंशनड हियर इट विल बी माने इट विल लुक टू मच अट्रैक्टिव बुझिला कि नै काहे कि कहै जाय छी सम काइंड ऑफ डेकोरेशन शुड बी मेड व्हेन वी राइट ईमेल्स बुझिला जेतबे हम ईमेल्स जाको लिखु छु ठीक है डेकोरेशन रहबा दरकार कोन डेकोरेशन विथ ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हेन वी आर गोइंग टू यूज इट ऑफिस पर्पज रे यूज करछु बोले किछटा जिंसो को हमको ध्यान देबा को पड़िबो ब्लॉक योर पैराग्राफ्स एट द लेफ्ट रो ब्लॉक रे लिखबार अछि से कहउचंती से कहउची यूज सिंगल लाइन स्पेस यूज करिवो बुझियला गोटे लाइन छाड़ी गोटे लाइन जोटा स्पेस यूज करिया पे कहउची विद इन द पैराग्राफ एंड डबल स्पेस बिटवीन द पैराग्राफ मध्य रे दुईटा स्पेस रहबा दरकार बुझियला एंटर की दुई थर मारिबार अछि बुझियला कि नै हां at the end before pressing the send button see that you have left your complete address and telephone numbers etc if you want to mention your email id or if you want to mention other ids or other content bujila we can add there is another
thing it has been developed today that we can add some files. Photo पठेबा को फोटो पठे पारिबा बुझियला कि ना PDF फाइल भी पठेबा को we can also send PDF files बुझियला. हाँ सर. And if we want to send a video, it is too difficult. As long videos we cannot send बुझियला. हाँ सर. So this is the complete format of email. You can watch it properly. It is mentioned here. एटा देखि दियो भलो भाबरे केति बुझिला कोन. But we should look after the address whether it is mentioned correctly or not, and the mail service providers बुझेला whether we have mentioned Gmail or Yahoo mail सेटा भी देखियो को पड़िबो बुझेला. देखो एठी को आछि it is written in an informal way बुझेला. informal way रे गुटे लेखा है. It is not a formal writing बुझेला. And when it will be called formal writing, if we write an email or if we want to send a mail to authorities or to some offices or to sir and teachers and lecturers or madam jaho kichi photos will kole setol hejo formal. We will have to look after the languages which are going to be mentioned here. जो words हमें mention करबा से सब जिंस स्टैंडर्डाइज हेबा दरकार जेतबेले हमें टिके फॉर्मल वे रे लिखुछु बुझिला. हां that we should look after carefully बुझिला. सी और देखो एटी टू लेखा है डॉक्टर डीपी पटनायक को लेखा जाइछि. ही कुड हैव मेंशनड सार बोली करी करा जाय परिबो बुझियला. So if you want to know more about the email, I have prepared a note on it. It is mentioned later on. You can see the picture. What are the most essential things when we write email? email रखिबा बेल को हम आउ कोन कोन ध्यान देबा पड़िबो आ तार व्यवहार केमते ही परिबो से विषय हमें जानि परिबा. Test format of email I am posting here in my video. You can see it properly.